Shri Nayak was instrumental in setting up the Larsen Toubro Public Charitable Trust. Its skill training centers have given opportunities to school dropouts and unemployed youths, and thereby converting the skill training centers into the engines of social change. He is also associated with a number of national councils and has been a member of a lot of Indian delegations to international bodies. In addition to being CMD on the L&T group of companies in India and abroad, Shri Nayak is also the Honorary Consul General for Denmark. Shri Nayak was appointed as Knight of the Order of the Dannebrog by the Queen of Denmark, Her Majesty Queen Margrethe. Shri Nayak is a recipient of a number of prestigious awards by awarding Gujarat Garima Award 2009 to Son of the Soil. The Government of Gujarat recognizes and honors Shri M. Nayak, who by an extraordinary achievements has made his family, his community and the state of Gujarat proud. Honorable Sri Narendra Bhai Ji, Chief Minister of Gujarat, Honorable Ministers of Gujarat, officials of Gujarat, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, I am very overwhelmed by this award because I always had a great feelings for Gujarat. Now that I know that Gujarat also has a feeling for me makes me very, very special today. Destiny brought me for education to Gujarat. Our activities today, with the help of Gujarat government, we have adopted 3 ITIs. We have put up a training center not far from Ahmedabad. In Hazira, we are creating a hub for training, which will then be connected with several ITIs, and that they will be brought to Hazira for advanced training. This is the way we are going at about 10 places around the country to train 20,000 youth of India. Gujarat obviously comes always first. I feel very privileged once again to have received this award. As Mr. Kailash Nathan cited, there are many awards I have got, but this is very special because this is from my motherland. And it is with that feelings that I have for this state and with the vision of Honorable Chief Minister, the Gujarat is marching ahead. All I can assure him is we are going to stand by and move step in step with all his plans and vision. Thank you very much. गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात गरिमा अवार्ड ये सबसे बड़ा अवार्ड है और हर 2 वर्ष में एक बार जब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम करते हैं उस समय एक कमेटी के द्वारा इन नामों की चर्चा कर करके एक नाम तय किया जाता है। अवार्ड पाने के लिए योग्य अनेक लोग होते हैं, हर एक की क्षमता होती है, योगदान भी होता है और इस अर्थ में बहुत लोग ऐसे हैं गुजरात में, ये बहुत रत्ना वसुंधरा है, लेकिन इस बार अनिल भाई का गौरव करना बड़ा स्वाभाविक था। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनके परिचय में जब से आया हूं, गुजरात के लिए कुछ करना और विशेष करके डिफेंस के क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाना, और डिफेंस एक ऐसा विषय है कि जिसकी अखबारों में चर्चा संभव नहीं होती है, लेकिन ऐसे एक महत्वपूर्ण काम को स्वावलंबी बनाना ये अपने आप में देश की बहुत बड़ी सेवा है और उस काम को अनिल भाई कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस गरिमा अवार्ड प्राप्त करने पर उनका गौरव कर रहा हूं, उनके परिवारजनों का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके सहयोग के कारण अनिल भाई एक समर्पित भाव से अपने पास जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को
बखूबी निभाते रहे हैं। फिर एक बार उन्हें बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक अभिनंदन। भाइयों बहनों, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, हमने उस कार्यक्रम को देखना है, इसलिए अनिल भाई को अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।